see the screen? Yeah, I Is it can see visible? the screen. Yeah. All right. Okay. तो यहाँ पे let's just continue with where we left off from last class, which was yesterday. हमने बात की थी about gene expression in prokaryotes. So we basically talked about the fact that we talked about two situations wherein in prokaryotes, yeah, a bacterial cell, if it is not surrounded by lactose sugar versus if it is surrounded by lactose sugar. And this is the example of gene expression which is in your syllabus. Obviously, प्रोकैरियोटिक सेल्स इन द सर्कुलर नेकेड डीएनए उसमें तो बहुत सारे जीन्स होते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ऑन व्हेन दो स्पेसिफिक जीन्स आर एक्सप्रेस्ड वर्सेस व्हेन दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड। तो हमें ये सिर्फ एक एग्जाम्पल करना है जस्ट टू अंडरस्टैंड, और दिस इज इन योर सिलेबस, कि कब एक्सप्रेशन होती है वर्सेस कब नहीं होती है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट prokaryotes, so I'm just going to leave some space to just copy paste that part for when it is surrounded with lactose sugar. Yeah. आज की क्लास में वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फर्स्ट विद द बेसिक स्टफ। हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखा था कि किस टाइप का डीएनए, कुड यू टेल मी कि यूकैरियोटिक सेल्स में किस टाइप का डीएनए एग्जिस्ट करता है? Like it's bound to histone proteins and it has a double helix shape. बिल्कुल। सो द डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉम्प्लेक्स्ड with histone proteins. सही है। And what was the second point which you were just talking about? That it has a double helix shape. बिल्कुल सही। सो द डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन प्रोटीन्स एंड इनफैक्ट डबल हेलिक्स शेप होता है। अच्छा, आर दे सर्कुलर या आर दे लीनियर इन शेप? Linear. बिल्कुल, डबल हेलिक्स का मतलब होता है अ शेप व्हिच इज इन दिस फॉर्म, कि द टू स्ट्रैंड्स आर इंटरलॉकिंग विद ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वो दोनों स्ट्रैंड्स लीनियर होते हैं। लीनियर शेप स्ट्रैंड्स इंटरलॉक करते हैं, इसलिए डबल हेलिक्स। लेकिन इवन दो डबल क्यों? क्योंकि दो स्ट्रैंड्स हैं एंड द टू स्ट्रैंड्स आर लीनियर इन शेप। अच्छा, when we talk about gene expression in eukaryotes, this is a bit difficult, or sorry, I wouldn't say difficult, it's a bit complex to understand, क्योंकि कुछ ज्यादा प्रोसेसेस इसमें होते हैं जिसकी वजह से या तो जीन एक्सप्रेशन होती है या तो जीन एक्सप्रेशन नहीं होती। इट्स नॉट दैट सिंपल कि you will have a repressor protein binding to the operator. Nothing of that sort exists in eukaryotes. Let's look at what does exist here. तो यहाँ पे I'm just gonna draw this double helix shape इस तरीके से। एंड ये जो मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, दिस इज बेसिकली जस्ट मी जूमिंग इनटू दिस पार्ट ऑफ द डबल हेलिक्स शेप ऑफ द डीएनए। व्हेन आई जूम इनटू दिस, आई एम जस्ट गोना ड्रॉ टू बॉक्सेस। अब ये दो बॉक्सेस क्या है? दे आर सिंपली रिप्रेजेंटिंग कि ये वाला जो सेक्शन है जीन का, इसके अंदर कौन सी चीजें। सो द इफ आई कैन जस्ट क्रिएट दिस बॉक्स प्रॉपर्ली, the first section of this entire DNA molecule is obviously the promoter region. I can just erase it just a second. We first have the promoter region. That's the first box, or you could say the first section of the DNA. And the next section of DNA is simply basically हमारा जो gene है which we are talking about. Normally जब हम प्रोकैरियोट्स में देखते थे तो did they have a binding site for the RNA polymerase in the promoter region? Could you repeat? जब हम प्रोकैरियोट्स में normally देखते थे, did they have a binding site for the RNA polymerase? Yes. They did. I just used to draw sort of a triangle which would serve as the binding site for the RNA polymerase. Promoter region की definition क्या है? It is a section of the DNA having a specific nucleotide base sequence, which is the binding site of RNA polymerase. Prokaryotes mein there used to be a physical binding site. If I can just go back to this diagram, look at this, a sort of a binding site on the promoter region itself. Eukaryotes mein it's not really like that. Eukaryotes mein you just have the promoter region and you do not have a specific binding site which is part of the shape of the promoter region. लेकिन
आरएनए पॉलीमरेज तो अभी भी यहाँ पे आके बाइंड करेगा। एनी आइडिया आरएनए पॉलीमरेज अब कैसे इस प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करेगा? To transcription factor. बिल्कुल, थ्रू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या चीज होती है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर सिंपली मॉलिक्यूल्स। अब are these part of the promoter region? No, they're simply attached to the promoter region, but they are molecules separate to the promoter region. So this is a transcription फैक्टर। तो यहाँ पे मैं नीचे डेफिनेशन लिखता हूँ ऑन द नेक्स्ट पेज। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर असल में होता क्या है? दीज आर सिंपली मॉलिक्यूल्स which are most of the times a protein, but again not all of the times, they can be molecules other than a protein as well, लेकिन majority of the time ये protein molecules ही होते हैं। So these are molecules, mostly protein, that serve as the binding site for the RNA polymerase enzyme. RNA polymerase enzyme, instead of directly attach karega to the promoter region in the eukaryotes, that's not going to happen. It's going to attach to the transcription factor. Uske baad it's going to go through the promoter and then through the gene, और फिर उस gene की expression होगी, मतलब transcription, RNA splicing, translation, और end में हमें वो protein या वो polypeptide chain produce हो जाएगी, which this specific gene was coding for. Does that make sense? Yeah, it does. अच्छा, now I'm gonna take you back to chapter 15 जो मैंने यहाँ पे खुला रखा हुआ डॉक्यूमेंट। You remember this? Gibberellins in seed germination? Yeah. Yeah, so gibberellins, let me just quickly revise this. Gibberellins कैसे काम आते थे in seed germination? सबसे पहले तो they used to be water uptake into the seed. Number one. When water uptake होता था seed में, this used to go into the embryo, जिसकी वजह से embryo gibberellins को रिलीज करता था। गिबरेलिंस फिर इसी सीड के अंदर एक लेयर था कॉल्ड दी एल्यूरॉन लेयर। गिबरेलिंस इस एल्यूरॉन लेयर के अंदर एंटर कर देते। आफ्टर एंटरिंग फिर वहां पे जाके गिबरेलिंस हेल्प करता था in the synthesis of amylase. So once gibberellin moves into the alluron layer, amylase is synthesized in this alluron layer. फिर amylase बाहर आता है out of this alluron layer, and obviously amylase is the enzyme which synthesizes the starch. जब वो synthesize या catalyze करेगा starch को, वो convert होगा maltose में। Maltose is converted to glucose by maltase, and then this glucose is eventually used by the seed in order to grow and germinate. तो हमारा पॉइंट मेनली ये है, पॉइंट नंबर 4। गिबरेलिंस अंदर गया और एकदम से एमिलेज प्रोड्यूस हो गया। हाउ इज दैट पॉसिबल? इफ गिबरेलिंस गोज इन, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस दैट अकर्स जिसके जरिए एमिलेज प्रोड्यूस होता है, हमें ये समझना है। सो व्हाट आई एम गोना ड्रॉ राइट नाउ इज अ सेक्शन ऑफ द डीएनए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये कौन सी चीज मैं बनाने जा रहा हूँ। आई एम ड्रॉइंग अ सेक्शन ऑफ द डीएनए present in one of the chromosomes present in the nucleus of the alluron layer cell. So I just want to you to know कि हम किस level पे इस वक्त zoom कर चुके हैं. So think about this the seed. फिर उसके बाद think about the alluron layer. Zoom into the alluron layer, you will find the alluron layer cells. Zoom into that, you will find the nucleus of an alluron layer cell. Zoom into that, you will find the chromosomes. Zoom into one of the chromosomes, you will find the DNA. And zoom in even more, you will find a section of the DNA present in these chromosomes, present in the nucleus, and the nucleus is present in the alluron layer के अंदर one of the cells. अच्छा, इस सेक्शन ऑफ द डीएनए में it firstly has this promoter region, और फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट टू द प्रोमोटर रीजन द जीन जो वो प्रोमोटर रीजन कंट्रोल करता है इज हमारी जीन फॉर एमिलेज प्रोडक्शन। मतलब ये वो जीन है इन द एल्यूरॉन लेयर सेल जो कि कोड करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एमिलेज एंजाइम।
नाउ हमने ये देखा था कि ये यूकैरियोट्स की बात हो रही है, तो वेयर इज द आरएनए पॉलीमरेज गोइंग टू बाइंड टू? इज गोइंग टू बाइंड टू दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर राइट हियर। बट लुक एट दिस, यहाँ पे मैंने क्या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को डायरेक्टली दिखाया है ऑन द प्रोमोटर रीजन, या इज इट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोमोटर रीजन? It's at some distance. इट्स एट सम डिस्टेंस। यहाँ पे why is this transcription factor not attached to the promoter region? क्योंकि इस स्पेसिफिक केस में देर इज अनदर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और प्रमोटर रीजन के बीच में है। This right here is called Della proteins. You just need to remember the name of this protein molecule, not the full form. Abbreviation is acceptable in the exam. Marking schemes वो agree करते हैं इससे. So there's a Della protein in between this transcription factor and the promoter region. डेला प्रोटीन के साथ एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है। सो यू हैव दिस नॉट रिसेप्टर मॉलिक्यूल, रिसेप्टर साइट। You have this receptor site which is also attached to the DELA protein. Can we say कि ये DELA protein block कर रहा है इस transcription factor को from attaching to the promoter? Can we say that? Yeah, it is. It is क्योंकि blocking. वो क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और प्रमोटर के बीच में, नॉर्मली हमने क्या देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और प्रमोटर तो एक दूसरे के ऊपर बैठे होते हैं, सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज ऑन टॉप ऑफ द प्रमोटर, बट हियर दिस डेला प्रोटीन इज ब्लॉकिंग द वे ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अच्छा, बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं, इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वी नीड टू नो? देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स। इन योर सिलेबस यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ वन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि ऑब्वियसली इसी एग्जांपल में यूज होता है। द नेम ऑफ दैट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज PIF। दैट्स इट। Again, just need to remember the acronym. It's an acceptable acronym. This is the name of the transcription factor जो कि gibberellins और seed germination वाली example में use होता है. So you need to remember these two names. PIF, this is the name of the transcription factor, and DELA protein, which is a protein blocking the transcription factor. DELA protein के साथ एक receptor site भी attached होती है. And we're going to look at in a second कि receptor site जरूरी क्यों होती है. यहाँ तक कोई confusion? Any doubt? No, it's clear. ओके, नाउ नोटिस अभी तक हमने गिबरेलिंस की बिल्कुल भी बात नहीं की है, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइट नाउ। लेट्स गो बैक टू दिस नंबर 4। once the sorry number 3, once the gibberellins diffuse into the alluron layer, गिबरेलिंस अब एल्यूरोन लेयर के अंदर आ गए, एल्यूरोन लेयर सेल्स के अंदर आ गए। These gibberellin molecules are now going to attach to this receptor site जो कि डेला प्रोटीन्स का हिस्सा है। What's gonna happen now? Now it will cause, इसकी वजह से ये जो अटैचिंग होती है ना गिबरेलिन्स एंड रिसेप्टर साइट की, एंड दिस रिसेप्टर साइट इज पार्ट ऑफ द डेला प्रोटीन, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाएगी इस डेला प्रोटीन की। डेला प्रोटीन अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये कैसे डिस्ट्रॉय होता है दैट्स नॉट रियली इन योर सिलेबस, बट आई कैन एक्सप्लेन दैट इन अ सेकंड कि डेला प्रोटीन डिस्ट्रॉय कैसे होता है। बेसिकली होता ये है कि when this gibberellin attaches to the receptor site, it activates a specific enzyme, and this enzyme catalyzes the activation of this DELA protein. That's it. Even if you don't want to remember that, you don't, not really a problem. लेकिन क्या चीज याद रखने की है, गिबरेलिन जैसी रिसेप्टर साइट पे अटैच या बाइंड करेगा, डेला प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। When the DELA protein is destroyed, can the PIF now attach to the promoter region? Could you repeat if they break? If the DELA proteins are destroyed, can the PIF now attach to the promoter region? Yes, yeah. It can. अब PIF एक बार promoter region के साथ attach हो गया, उसके बाद now the RNA polymerase simply attaches to the PIF, promoter region के through move करेगा, gene के through move करेगा और amylase produce हो जाएगा। मतलब कि ये जो gene है for amylase production, this gene is going to be expressed. This is basically all you have to understand for gene expression in eukaryotes. मैं लिख देता हूँ everything we just talked about. Once gibberellins
diffuse into the alluron layer, they bind to the receptor site. और कौन सी receptor site? They bind to the receptor site that is part of the DELA protein. Once they do that, this causes the activation. तो मैं सारी information यहाँ पे लिख रहा हूँ. This causes, so that it will be easier for you to revise, this causes the activation of an enzyme. जब ये बाइंडिंग होती है गिबरेलिंस और रिसेप्टर साइट के बीच में, तो एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है विच डिस्ट्रॉयज द डेला प्रोटीन. और हमारा मेन मकसद भी यही था, हमें इस डेला प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना था, क्योंकि इट वाज एक्टिंग एज अ बैरिकेड, अ बैरियर और अ ब्लॉकेड बिटवीन द पीआईएफ एंड द प्रोमोटर. तो इट डिस्ट्रॉयज द डेला प्रोटीन्स. दिस अलाउज द पीआईएफ, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, to attach to the promoter region. So once it attaches to the promoter region, उसकी वजह से क्या होता है? Now what's gonna happen is the RNA polymerase will now bind to the PIF, the transcription factor, moving through the promoter. And you need to remember this, अगर PIF के ऊपर वो बाइंड करेगा, तो वो प्रमोटर रीजन के थ्रू भी मूव करेगा आरएनए पॉलीमरेज, और उसके बाद जीन एक्सप्रेस होगा. और जब वो जीन के थ्रू मूव करेगा, इट्स नॉट लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे अटैच किया डायरेक्ट जीन के अंदर आ गया. नो, इट हैज टू मेक इट्स वे थ्रू द प्रमोटर रीजन. सो मूविंग थ्रू द प्रमोटर रीजन and then eventually the gene. एक बार वो जीन के थ्रू मूव कर जाएगा, दिस कॉजेज द expression of the gene producing the amylase enzyme. So let me ask you this. Let me first just complete this, but I'll ask the question. This causes the expression of the gene, hence producing the amylase enzyme. My question to you was, अगर पास पेपर क्वेश्चन ये पूछता है कि हाउ डज सीड जर्मिनेशन अकर, आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पार्ट कि जीन एक्सप्रेशन कैसे होती है, या आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन दीज 5 पॉइंट्स? These 5 points? बिल्कुल, सीड जर्मिनेशन किस तरीके से होती है इज दीज 5 पॉइंट्स. वाटर अपटेक इनटू द सीड, एम्ब्रायो रिलीजेस गिबरेलिंस, गिबरेलिंस डिफ्यूज टू एलिरॉन लेयर, एलिरॉन लेयर में एमिलेज प्रोड्यूस होता है, एमिलेज एलिरॉन लेयर के बाहर आता है, एमिलेज स्टार्च को कैटालाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है इनटू माल्टोज, maltose into glucose through maltase, and glucose is used by the seed for germinating and growing. This is what you need to explain जब वो कहे कि seed germination कैसे होती है. इस सवाल का एक और भी वर्जन है. हाउ डज गिबरेलिंस हेल्प इन सीड जर्मिनेशन? देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस. सो यू कुड रिमेंबर इट बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स टुगेदर. आई वुड एडवाइज यू दोनों टॉपिक्स को जस्ट रिमेंबर इट टुगेदर. जो सवाल आए, उस the thing you have remembered, uska section, just put that into your answer. So if it asks the seed germination overall kaise hoti hai, explain these first points, and then how does gibberellins participate, then you express or explain the gene expression ka part. Does that make sense? Yeah, it does. Okay, so that would be it for this chapter. Again, जैसे ये मैंने कल कहा था कि chi square test हम सारे statistical test के बाद statistical test एक साथ करेंगे. The Pearson correlation, Spearman's rank correlation, Weinberg equation, chi square test, the p-values, the probability, everything in just 1 or 2 classes together. So have you revised the entire topic ताकि हम आज past paper questions कर सकें? Yeah, I have.
So I'm just gonna remove the share screening for a second. I'm going to bring the A2K topicals, and then we could just I'm just gonna solve them, and then I'll explain them, solve, explain, जैसे हम हमेशा करते हैं. Just give me 2 to 3 minutes. I'll just get the topicals. Okay, I'm just gonna share the screen. Is it visible? Yeah, it Mhm. is. अच्छा, so just in front of you, हम साथ में ही we can just highlight all of the questions. I'll just quickly read the questions and see कि हम कौन से कर सकते हैं आज की क्लास में. So yeah, we can do this क्योंकि इसमें meiosis पूछे जा रहे हैं, and then this is artificial selection. This is the next chapter. Yeah, we can do this. एक proper classical genetics और inheritance का question है इसमें. Meiosis का हम already कर चुके हैं. Yeah, we can do codominance as well. And yeah, this is interesting. Oh, this is really interesting. So yeah, so we can do this entire question. I'm just gonna put this in favorites. So add to favorites. उससे पहले वाले questions भी. So even this, add to favorites. And then the first question, add to favorites. Let's just try these three, and then if we have time, we'll move on. So let's read question number one. Figure 4.1 एक डायग्राम है जो कि एक फोटो माइक्रोग्राफ से दिखाई गई है of an animal cell undergoing meiosis. Now, since you're also giving AS, let me ask you this as well. फोटो माइक्रोग्राफ का मतलब क्या होता है? मतलब कि ये किस तरीके के माइक्रोग्राफ से क्लिक की माइक्रोस्कोप से क्लिक की गई है फोटो? Light micrograph? वो microscope, sorry. लाइट माइक्रोस्कोप, बिल्कुल सही. व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उसमें से फोटो खींची जाती है, इट्स अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ. उसी तरीके से स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ. बट इफ इज जस्ट फोटो माइक्रोग्राफ, मतलब कि वो लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें, बिकॉज फोटो का मतलब होता है लाइट. अच्छा, एक लाइट माइक्रोस्कोप से खींची गई फोटो फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ एन एनिमल सेल जो कि मायोसिस अंडरगो कर रहा है. उन्होंने हमें नहीं बताया मायोसिस 1 है या मायोसिस 2 है. Identify the stage of meiosis shown in figure 4.1. So what's your answer for this? Just see कि ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. फर्स्टली meiosis 1 है कि meiosis 2 है, और उसके बाद once you understood कि 1 है या 2 है, then उसके बाद कौन सा वो proper stage है, then you will understand that. Is it telophase? टीलो, तो क्या ये टीलोफेज 1 है या क्या ये टीलोफेज 2 है? Can we distinguish that? Is it telophase? Oh wait, telophase 1. टीलोफेज 1, and why is that? मतलब ये Because there are 1 only क्यों है? two daughter nuclei. There are only two daughter nuclei. Okay. तो यहाँ पे you obviously see two different cells. तो इसका मतलब कि टीलोफेज तो है.
अब टीलोफेज 1 या टीलोफेज 2 का सवाल है। यू सी द क्रोमोसोम्स ये किस तरीके से अरेंज्ड है। Yes, sir. या तो ये क्रोमोसोम्स किस तरीके से अरेंज्ड है? आर दे अरेंज्ड इन टू सेपरेट लाइंस जिसकी हमने बात की थी, या आर दे अरेंज्ड इन वन लाइन? Could you repeat? जो हमने डायग्राम देखी थी अबाउट द क्रोमोसोम्स, यू रिमेंबर वी टॉकिंग अबाउट के स्टूडेंट्स अरेंज्ड इन वन लाइन वर्सेस स्टूडेंट्स अरेंज्ड इन टू लाइंस। Yeah. या तो फिर ये किस तरीके का एग्जांपल है? जस्ट गिव मी वन सेकंड। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन बार बार ग्लिच कर रही है। सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट। आई एम जस्ट गोना फिक्स दिस इन वन सेकंड। एक सेकंड बस। आई डोंट नो आज ये क्या हो रहा है, बार बार वो स्क्रीन ग्लिच कर रही है फॉर सम वियर्ड रीजन। अच्छा, फॉर द लास्ट टाइम, कैन यू सी द स्क्रीन? No, I can't. Oh, व्हाट अबाउट yeah, नाउ? I can now. अच्छा, so we are talking about this question. So what was your final answer for this? It was telophase 1. Telophase 1. Okay. Hmm. Right, 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 right. We're gonna find this. Okay, we don't even need the marking scheme for this. You're right. This is telophase 1. Acha, now this is interesting. My marking scheme is के लिए ढूंढना था so that I can explain this better. Describe the main events that will occur to complete meiosis from this stage. So, like, we're gonna explain about the prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2 over here. Like, basically, how the Mhm. nucleolus and the nuclear envelope disintegrates, and basically the spindle fibers form, and basically then the chromosomes they line up across the equator, and then the non-sister chromatids they separate and they move to the opposite poles. And when the chromosomes reach the opposite poles, they start becoming uncondensed, and the nuclear envelope reappears, something like that. Very good. So when you are at telophase 1, if you have to complete masses, you're right. Prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. So you just have to explain all of these, which you did. अगर एक 4 mark का question है, it's obviously asking you to explain the 4 stages in separate points. So 1 point from prophase 2, as you said, nucleolus disappear. फिर they line up across the metaphase plate या the equator of the cell. The spindle fibers की वजह से it pulls the chromatids apart. And you remember this in this, the two shapes in which they pull it apart? Yeah. Yeah, so this and then telophase 2, the nucleolus and the nuclear envelope reappears again, and in the end, you have 4 cells that are being produced, each of which are a haploid. So that's your 4 marks right there. So should I write the entire thing or just can we move on? It's fine. All right. Now what about this? This is selection and variation. We can skip this. Uh, hmm. This is interesting. So read through this question, and then in the end, you have to draw genetic diagrams to account for both of these process. This is a very, very interesting question. Just try this.
Okay, if you've read the question, this is the other part of this entire thing. I can just minimize it ताकि दोनों चीजें दिख जाए. Yeah. I don't have to give any ratio over here, right? No, no ratios. Just the genetic diagrams, and in the end, offspring के क्या genotypes होंगे and क्या phenotypes होंगे. Yeah, I'm done. Right. So what about the first one? Black female into orange male. What were the parents' ke genotypes? For that one, the parental genotypes, they were XOY and XBXB.
Okay, so orange male के लिए XOY, right? सही है. And then what was the second one? XB. XBXB. Yes, बिल्कुल सही. क्योंकि this question did this question involve codominance? Yes. बिल्कुल. So what I'm gonna do is let's read the question together ताकि हम hints pick up कर लें उस question से and talk about the strategy which we were talking about earlier. You remember monohybrid inheritance versus dihybrid. अगर dihybrid होगा तो epistasis होगा या नहीं होगा, the dichotomous key. You remember the dichotomous key? Yes, I do. Yeah. So I'm just gonna write it according to that. So coat color in cats is determined by a sex-linked gene. This is the first piece of information you know कि ये autosomal inheritance की बात नहीं कर रहे. अच्छा, दो एलील्स इसको कंट्रोल करते हैं, ब्लैक और ऑरेंज. आर दे टॉकिंग अबाउट वन जीन या टू जीन्स? 1G, वन जीन. सो इज दिस मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस और डाइहाइब्रिड? monohybrid. Monohybrid. So now I'm just going to write down all of the information जो हमें अभी तक पता है. We know this is monohybrid inheritance and we know this is sex linkage. इसका मतलब जब हम alleles के नाम लिखेंगे, it's gonna be with an X or either with a Y. That's what we don't know up until now. Black cats are mated with orange. Female offspring are always tortoiseshell. How many different phenotypes can you find here? Three. Three: orange, black, and tortoiseshell. Whenever you have more than two phenotypes, and that is when heterozygous का अलग से phenotype होता है, as you said earlier, this is codominance. तो हमें codominance का aspect भी यहाँ पे दिख रहा है. Now, what is tortoise shell? It's explaining what the word tortoise shell means. कि black and orange patches होते हैं of various sizes, while the male offspring has the same coat color as their mothers. Now, it also gives us the symbols, and we need to draw genetic diagrams to account for both of their crosses. मतलब cross करना है हमें, एक Punnett cross बनाना है और offspring के genotypes और phenotypes बनाना है. So, what was the Punnett cross which you drew here? Was it like this? XB and XB? इस तरीके से? Yeah, it was. Yeah, so then XB and then XO, XB and then XO, XB and then Y, XB and then Y. What were your four offspring genotypes? Were these the four For ones? the female ones, they were tortoiseshell, Yeah, and for the male ones, they were black. bilkul. So tortoiseshell because we see codominance and male ones is black. Perfect. Now what about this? For this, the parental phenotype, the genotype, it was XOXO, and Mhm. for the female, and XBY for the male. Right. Okay, and then the Punnett cross. It's going to be something like this. And then we have the offspring K genotypes. Just gonna write them down quickly. Okay, what were your offspring phenotypes? The male offsprings, they both were orange, and the female Hmm. offspring, they were tortoiseshell. Tortoise shell. बिल्कुल सही. So that's the four marks right there. अच्छा. So यही अगला सवाल था. List the genotypes and the phenotypes of the offspring that may result from mating a tortoise shell female with a black male. I think this was another question. Yeah. Okay, so could you try this now? Genotypes and pheno. It's just another, think of this as a part C. This was part A, part B, and then part C. So you have a black male and a tortoise shell female. And if you want, you can make the Punnett cross here. And then in the end, you can list the genotype and the phenotypes of the offspring. उसमें कोई मसला नहीं है. You can do that. So once you're done with the entire thing, you could just tell it all together. Yeah, so basically for the genotypes, there's a possible combination of XBO, XBB, uh, and
XOY and XBY. Sorry, could you just repeat? मतलब you're telling the offspring के genotypes, right? Yes. So before XBO. that, sorry, just 1 second. Before that, what are the parents' के genotypes? For the parents genotype, it's XO into XOXB into XBY. Okay, into XPY. सही है. उसके बाद what are the phenotypes and the genotypes of the offsprings? For the offspring, it's XBO, Hmm. XBB, XOY, Okay. and XBY. XBY. The Right. first one is tortoise shell, the second one is black, and then orange and then black again. And then black again. Let me just confirm. मैं यहाँ पे Punnett cross भी बना लेता हूँ. So you did make a Punnett cross and then you tried to solve them, right? Yes, yes, I did. Right. Let me just double check. XBXO, right? And then you have XOY, बिल्कुल सही, and then XBXB, and then XBY. Okay. Suggest an explanation for the tortoise shell coat in terms of the activity of the X chromosomes. What about this? You need to suggest a possible explanation कि tortoise shell का coat आया कैसे? How did it come into existence in terms of the activity of the X chromosome? So it's a bit interesting. So just think So about this. like basically the like there's one X chromosome from the father and one X chromosome from the mother, and basically Mhm. the one that comes from the father, it basically determines if the coat is going to be turtle shell colored. But then how does it explain the activity of the X chromosomes? यहाँ पे तो you were also explaining the activity of the Y chromosomes, right? So simply just talking about the X chromosomes, कि उसमें ऐसा क्या है with which we are able to talk about the tortoise shell as well? Any idea? Like it's X chromosome, it's present in both the mother and the Hmm. father, and Okay. like the X chromosome from the father, that's the one that passes on to the offspring, so that can like determine the color. Right. Makes sense. Makes sense. तो यहाँ पे can we say कि X chromosome was एक second. Could you just repeat your point once again? I just want to make sure all of the thoughts are aligned together. Could you just repeat it? Basically, the X chromosome from the father, that's the one that determines the color because, From the father? yes, Okay, from the father. सही है. because I the got it. turtle Then. shell was possible only in the female offspring, and for the Hmm. female offspring, there's one allele that's inherited from the mother, and the other allele is inherited from the father, and like there's only one X chromosome from the father. Makes sense. बिल्कुल सही. Now I get what you are trying to talk about कि जो X allele है that from the father basically determines कि जो mother and father होगा उनके क्या phenotypes होंगे. And इस तरीके की inheritance को have you heard about the word zigzag inheritance? No. Okay, so this is not really in your syllabus, लेकिन this is probably what explains this part C. Zigzag inheritance is कि यहाँ पे take an example. Male का जो phenotype था. Let's say if a male, can a male be possibly a tortoise shell? Can it be that? Is it possible? No, it's not. It's not. There are only two possibilities, and that is for the male to be either black or orange. क्योंकि Y chromosome के ऊपर there is no allele which is responsible for affecting this particular phenotype. It's only on the X chromosome. So either it can be XBY or either it can be XOY. Does that mean कि the male अपना XB या XO pass करेगा downwards? Is that right? Yes. ये
एक्स बी या एक्स ओ, इस मेल को कहाँ से मिला? डिड इट गेट इट फ्रॉम हिज फादर और फ्रॉम हिज मदर? एक्स क्रोमोसोम्स नॉर्मली किस में ज्यादा होते हैं, फ्रॉम अ फादर और फ्रॉम अ मदर? from a mother. From a mother. It got it from his mother, is now in the father, and it goes to his daughter. You see this sort of zigzag inheritance जो यहाँ पे दिख रही है? Yeah. So mother to father, this father gives it to her daughter, क्योंकि ये X chromosomes will be passed to their daughter. अब son को क्यों नहीं? क्योंकि son के पास भी तो अपना Y chromosome होगा ना. That will come from his mother. So यहाँ पे अगर एक father है और एक mother है, mother से to the son, father से to the daughter. So it's zigzag inheritance. You don't really need to understand this particularly. लेकिन if you do, it's a bit better. And this is what explains this, and that is the point which you are trying to explain. So you know this, you just don't know the terminology for it. So that's fine. QK, the terminology is not important to us. Right, let's try this. Figure 2.1 एक diagram है जहाँ पे हमें एक pair of homologous chromosomes दिख रहे हैं during meiosis. Look at the keyword, pair of homologous chromosomes during meiosis. Is this meiosis 1 or meiosis 2? Meiosis one. Meiosis 1, because we still have the homologous chromosomes का pair. Meiosis 1 का पूरा purpose क्या था? Separation of homologous chromosomes. जब वो अभी तक separate नहीं हुए हैं, meaning we have not yet completed meiosis 1. What stage of meiosis is shown right here? Look at the arms of the sister chromatids. जो white वाला chromosome है, उसका arm में थोड़ा सा black है, and black वाले के थोड़े से arm में white है. Switching of the arms, ये कब होता है? Uh, is it phase one? प्रोफेज वन, बिल्कुल सही. दिस इज वेयर बाइवेलेंट बनता है क्याज्मा पे. दिस इज वेयर द बाइवेलेंट इज फॉर्म्ड, एंड द इंटायर प्रोफेज वन का प्रोसेस होता है, रिजल्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो यहाँ पे दिखाई गई है. डिस्क्राइब व्हाट हैज अकर्ड बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जिसकी हमने अभी भी बात की. So सो व्हाट हैज like अकर्ड? basically the like process of synapses occurs and the homologous chromosomes they pair up and they form a bivalent and crossing over may occur and बिल्कुल. like where the crossing over occurs there's a chiasma formation. बिल्कुल सही. So you need to remember the keywords which you just talked about every single time. Synapses बनता है, bivalent form होता है synapses की वजह से, then the point at which the arms of the sister chromatids are switching, that's the chiasma which is formed, and crossing over may or may not occur. इस particular figure में is crossing over occurring? It is. It is. So that's what you have to write. Describe what has occurred between the two. So meaning they're asking you for a reference from figure 2.1. So बिल्कुल यहाँ पे crossing over has occurred. Right. This is selection and variation. Okay. We can look at this now. Look at this question. Sometimes a gene has more than two alleles. तो normally जो हम genes देखते हैं उनके दो alleles होते हैं. For example, a gene that codes for body color, capital B allele, small b allele. A gene that codes for body height, capital T allele, small t allele. Sometimes a gene has more than two alleles, termed multiple alleles. The ABO blood group system in humans, जो कि basically बताता है कि what's your blood group? Is your blood group A? Is your blood group B? Is your blood group O? This is called ABO system. This system in humans is controlled by a gene, और इस जीन के तीन एलील्स हैं, A, B and O. Alleles A and B are codominant and allele O is recessive to both. क्या इसका मतलब ये होगा कि जब A और B साथ में एक जीनोटाइप में एक्सप्रेस होंगे, are you going to get a different phenotype or the same phenotype? Let me rephrase my question. When you have the A allele and the B allele together in a genotype, is it going to be the same phenotype as A or B, or is it going to be a completely new phenotype? Completely new phenotype. बिल्कुल. दिस इज द प्रोसेस ऑफ कोडोमिनेंस, और वो अगली लाइन में समझाया हुआ है. द ब्लड ग्रुप ए बी टुगेदर इज द रिजल्ट ऑफ कोडोमिनेंस. Explain what is meant by codominance. Remember the definitions we talked about at the start of the chapter? So 3 marks for each point, a mark for each point. So if I can just go here.
Let me just go to the start of the chapter right here. तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी बात की थी about codominance. If I can find it. So look at this. The three different points that we talked about. I'm just gonna remove these points right now so that you can answer them, and then I'm going to go back to the answers. So just try this out. So can we write like that when both the alleles express themselves in a heterozygous genotype and there are more than two Mhm. possible phenotypes, and बिल्कुल the phenotype of a heterozygote is different from either homozygote? बिल्कुल perfect. These are the perfect the 3 points which you have to write. Two different alleles. हाँ, this point you missed a bit कि दो different alleles equally contribute करते हैं. Meaning कि यहाँ पे इस example में हमारे पास A allele था and capital B allele था. Capital A will contribute 50% to the phenotype and the same is for capital B. अब अगर हम नॉर्मल विदाउट कोडोमिनेंस के एग्जांपल्स करते हैं तो फिर सिर्फ एक ही एलील होता है राइट व्हिच कंट्रीब्यूट्स फुली टू द phenotype, the dominant one. Yes. तो इस particular example में whenever you're talking about codominance, both of the alleles are responsible for equally expressing themselves in the phenotype. Point number one. Point number two, as you said, more than two phenotypic variations are possible. And number three, you also said this, heterozygote ka phenotype is different from the phenotype of either homozygote. So just you missed this one point, the both alleles that are codominant, ये दोनों alleles are equally expressed in the phenotype. 50-50% या you could say equally contribute करते हैं in the phenotype. Right then, let's look at this. And this is really interesting. In humans, there is a gene that codes for the production of a protein called factor VIII. We'll stop the question here. Could you tell me what's the gene that codes for a production of a protein called factor VIII? What's the name of this gene? We talked about this. Could you repeat your question? So in यहाँ पे लिखा हुआ है कि in humans एक जीन होती है और ये जीन कोड करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन और इस प्रोटीन का नाम है फैक्टर 8 प्रोटीन. What's the gene that codes for what's the name of this gene? This is in your syllabus. Uh, was it the HBB gene? Mm-mm. No. फैक्टर 8 प्रोटीन. सो रिमेंबर उस जीन का नाम और प्रोटीन का नाम बहुत सिमिलर था. सो फैक्टर 8 प्रोटीन तो जीन का नाम क्या था? Was it also factor eight? फैक्टर 8 बिल्कुल सही. दिस इज अ वेरी वेरी इजियर जीन टू रिमेंबर. क्यों? क्योंकि द प्रोटीन इट कोड्स फॉर या इस जीन के एक्सप्रेस होने के बाद जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन का नाम एंड उस जीन का नाम एग्जैक्टली सेम है. फैक्टर 8 प्रोटीन, फैक्टर 8 जीन. तो ये जीन है फैक्टर 8 जीन. नाउ टेल मी दिस, इस जीन की इनहेरिटेंस जब होती है डू वी कॉल इट ऑटोसोमल इनहेरिटेंस या डू वी कॉल इट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस? Autosomal? हाँ, इट इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज. रिमेंबर फैक्टर 8 जीन ब्लड क्लॉटिंग. Ah, yeah, sorry, I mixed up. या सो ये फैक्टर 8 इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम. सो विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चन हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन इस जीन के बारे में. अब इस डोमिनेंट एलील इस जीन का फैक्टर 8 प्रोड्यूस करता है. वी ऑलरेडी नो दिस एज वेल. रिसेसिव एलील प्रोड्यूस नहीं करता, हमें ये बात भी पता है.
A person who is unable to make factor VIII protein has hemophilia, in which the blood fails to clot properly. We even know this. This is the main question. Explain why a man with hemophilia, so you remember the two genes, you can put any symbol for your reference यहाँ पे. So let's suppose capital H is the dominant allele and small h is the recessive allele. A person, a male who has hemophilia would be X small hy. Explain why a man with hemophilia cannot pass this disease to his son, but may pass this disease to his grandson. So just try this out. Basically, because the gene for hemophilia it's present on the X chromosome, so like the X chromosome does not pass to the son, like the Y chromosome passes like in like for males and Mhm. Right, correct. And then after that, you're on the right track. कि जो फादर है वो सिर्फ वाई क्रोमोसोम पास करता है टू हिज सन्स एंड नॉट द एक्स क्रोमोसोम. एंड यू नो दैट हीमोफीलिया इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. लेकिन दैट स्टिल डज नॉट एक्सप्लेन कि ये ग्रैंडसन को कैसे पास, अगर सन को पास नहीं कर सकता तो फिर ग्रैंडसन को कैसे पास कर सकता है. बिकॉज रिमेंबर दिस, अगर इस फादर के पास स्मॉल एच एलील है एंड यू सेड कि ये सन के पास नहीं जाएगी, विच इज राइट, क्या ये एलील डॉटर के पास जाएगी. yeah, I got it. So like basically, this allele it passes on to the daughter, and the daughter can हम्म. pass it on to the son, her son after like so. Since हम्म. even if she's a carrier, she can pass it on to her son, and hence her son can have hemophilia because only one X chromosome passes on. बिल्कुल परफेक्ट. सो फादर से डायरेक्टली उनके सन में नहीं आ सकता क्योंकि इट्स मेल टू मेल में से वाई क्रोमोसोम पास होता है. लेकिन दिस एक्स रिसेसिव एलील एक्स स्मॉल एच ये तो उनकी डॉटर को पास हो जाएगा और डॉटर से उनके सन को पास हो जाएगा और इनका भी रिलेशन बनता है ग्रैंड सन का. एंड यू राइट कि सिर्फ एक ही एलील पास हो सकता है, इट्स गोना बी द रिसेसिव एलील. परफेक्ट. That's 3 out of 3. This is really good. You got this right. क्योंकि these are the type of questions you will be tested in genetics. वो वाले क्वेश्चंस नहीं जो डेफिनेशन पूछते हैं, वो भी आते हैं. डिफाइन हेटेरोजाइगस, डिफाइन होमोजाइगस, फ्री के जो मार्क्स होते हैं, या ड्रॉ जेनेटिक डायग्राम, एक्सप्लेन F1 जनरेशन, दीज आर फ्री मार्क्स. ये होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो कि चैप्टर 16, चैप्टर 17, 18 और 19 से बहुत ज्यादा आते हैं. सो वी कैन ट्राई मोर ऑफ दीज. I know you know how to just draw the genetic diagram, so we can skip this. Uh, okay, okay, we can skip this. Okay, this is interesting. So just try this out. Meiosis is a type of nuclear division, और इस न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन. फिगर 7.1 डायग्राम्स दिखाता है मायोसिस के स्टेजेस के. तो इसमें मायोसिस 1 भी है, इसमें मायोसिस 2 भी है, लेकिन ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है फ्रॉम ए बी सी डी ई एफ एच आई जी. Complete the table below by writing the stages of meiosis in the correct order. Some of the stages have already been written. तो meiosis 1 में उन्होंने पहला स्टेज लिख दिया है, that is stage B. What is the stage meiosis 1 का? The early prophase. The early prophase 1. Always remember to put the number क्योंकि meiosis 1 है, so early prophase 1. What's going to be the one after this? So this is number 1. उसके बाद? Could you move a bit down? Yeah. I think I still can't see the letters. थोड़ा सा और नीचे. Oh, yeah. Yeah. So is it going to be J? J. And why is it J? Any reason for that? Because in the late prophase, homologous chromosomes they pair up. बिल्कुल सही. The homologous chromosomes pair up. So एक चीज I think you are following this कि whenever you're talking about meiosis 1, you're basically only going to be looking at the pictures जहाँ पे सिर्फ एक सेल है, isn't it? Yeah.
ये तो जब दो सेल्स होंगे दैट मीन्स कि meiosis वन तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, सो इट्स बेसिकली बिटवीन this and this. And because we're talking about the prophase one, you're right, ये crossing over भी थोड़ी बहुत दिखाई हुई है, the arms sticking across and यहाँ पे even here and here, and then the homologous chromosomes के pairs pairing up together. Okay, after this, Yeah, after that, basically crossing over occurs, so I think it's G, G, okay, crossing over occurs, बिल्कुल सही. and then it's going to be H. H, correct. What stage is this, by the way? Basically, it's metaphase बिल्कुल सही, metaphase one. one. Oh yeah, Yeah, sorry, metaphase one, and yeah, then it's going to be F. correct. Stage name, Uh, and anaphase one, बिल्कुल सही. And then after that, and then it's going to be E. correct. This is telophase one, or the Telophase one. starting of telophase one. Yep. After that, And then it's going to be D. D, correct. This is cytokinesis after telophase one happening. So now you're gonna start meiosis two now, right? Yeah, and then A. A, I think. No, wait. Uh, It's not A. It's going to be I. I. Why is it I though? Because the chromosomes are lining up at the equator. बिल्कुल सही. The chromosomes are lining up at the equator. Okay, why is it not A? You said A earlier. Why not A? Because I just got confused when I saw two cells. I was like, oh, it's gonna start from here. But then I realized okay, basically they're not like the full chromosomes over here. They're They're like just the in form of non-sister chromatids. chromatids. Yeah. Bilkul. Right. So this Yeah. is number eight. And Okay. then it's going to be C Anaphase two, and then A. and then A, number 10. Perfect. Acha, now you can also see this clearly. This is a very good question क्योंकि इसमें हमें clearly दिखता है metaphase one and metaphase two में. It's two lines versus one line. It's the same example. दो centrioles हैं, metaphase plate के across हैं, spindle fiber centromere पे attached है, but the only difference is two lines instead of one line. So it clearly just explains this. Okay, बिल्कुल सही. So this is a 4 mark question. That's really good. हाँ, this is interesting. ये हमने किया भी था क्लास में. Explain how meiosis can result in genetic variation amongst offspring. एक के बाद एक हमने factors देखे थे resulting in genetic variation amongst offspring. It's a 5 mark question. So you could just tell me the stages and you can explain it. But just the stages, or sorry, the factors in the list. Yeah, so basically, the crossing over occurs in like बिल्कुल. prophase. So like the alleles are exchanged, and then when the homologous chromosomes break and then they join back again, new combinations Separate, of you mean? yeah they separate and then they join Yeah. back again. Then new combinations of alleles are formed. बिल्कुल सही. सो न्यू एलील कॉम्बिनेशन बनता है जिससे जेनेटिक वेरिएशन बढ़ती है ऑफस्प्रिंग में, राइट? नंबर टू. Yeah, and then we have mutation because like if there's a हम्म. mutation, then it can basically cause an alteration in the sequence of nucleotides. So like it can cause variation by like forming new alleles. या बिल्कुल सही. अच्छा, ये वाला पार्ट हमने अभी तक किया नहीं है. वील डू दिस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 17 कि वी आर जस्ट गोना ऐड अनदर पॉइंट कि कैसे जेनेटिक वेरिएशन बढ़ती है व्हिच इज म्यूटेशन, एंड दैट इज बिल्कुल सही. दैट्स नंबर 2. सही. उसके अलावा रिमेंबर And व्हाट हैपेंस then इन मेटाफेज. independent assortment. बिल्कुल सही. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. एनीथिंग Yeah, एल्स? and then independent assortment happens. So like there's a random alignment of bivalents during metaphase one. बिल्कुल सही. So yeah, and And there was um one more. the random fertilization, like the so बिल्कुल basically सही. the Yeah. random fusion of two haploid gametes.
बिल्कुल। सो द रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमीट, हमें नहीं पता कि कौन सा गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा जिसकी वजह से एक जाइगोट बनेगा फॉर एन ऑफस्प्रिंग व्हिच विल कन्वर्ट इनटू एन एम्ब्रायो देन द फीटस एंड देन द ऑफस्प्रिंग। तो व्हिच टू गैमीट्स आर गोइंग टू फ्यूज विद ईच अदर, हमें उसका कोई आइडिया नहीं। इट्स अ कंप्लीटली रैंडम प्रोसेस। तो ये चार स्टेजेस हैं, जस्ट 1 to 2 lines for each stage, or why am I saying stages, for factors, sorry. So 1 to 2 lines for each factor, and that is going to be equal to total 5 marks, right? So any confusions from today, आज की class में, anything, any doubt from any part of the chapter? No, it's clear. Right. So again, just because हमने आज थोड़े बहुत एक दो से तीन topicals कर लिए doesn't mean कि you should just stop doing topicals. Please keep doing more and more and more topicals. And then once we are done with chapter 17, फिर हम इसका test लेंगे 16 and 17 का साथ में. And then we'll move to 18 once we are done with that. फिर simultaneously हम P5 की practice भी शुरू कर देंगे. So yeah, that is it for chapter 16 and उसके topicals. इंशाल्लाह हम Tuesday से फिर chapter 17 शुरू करेंगे. Okay, so that is it for today. Again, if you have any confusions, just feel free to just message and then I'll be able to help you out with any past paper questions you have. All right. Thank you, Allah Hafiz. Thank you, Nafis.